Namaste Gurukulians. Hope you all are fit and fine at your home. So now again we are going to start our chapter, that is acids, bases and salts. So our topic is, already we have discussed about some salts like bleaching powder, preparation of sodium hydroxide and preparation of baking soda. So in this very lecture we are going to discuss about the preparation of washing soda, water of crystallization and plaster of Paris. Okay, so let's start with the washing soda. Our topic name is washing soda. If we talk about the color of washing soda, it is transparent, crystalline form. Its chemical formula is Na2CO3 into 10 molecule of water, and its chemical name is sodium carbonate decahydrate. See, Na mean to say sodium, CO3 sodium carbonate, deca stands for this 10 molecule, hydrate mean to say water molecule. So the chemical name of washing soda is sodium carbonate decahydrate. Decahydrate mean to say 10 water molecules are present into the formula of washing soda. Okay, so the common name of sodium carbonate decahydrate is the washing soda. It is the common name, it is chemical name, it is the chemical formula. Okay, so now we will talk about the preparation of washing soda. See, in our previous lecture I told you about the baking soda and how we have to prepare the baking soda. The process which we used in that, the name of that process is the Solvay process, and the same process we have to use in this, because first we need to prepare the baking soda, and after heating the baking soda we got the sodium carbonate in that lecture. Okay, and the unhydrated or anhydrous sodium carbonate is known as the soda ash. So how to prepare the washing soda? See, preparation of washing soda. When carbon dioxide is passed through brine solution with saturated ammonia, and it is the same process as we used in the preparation of baking soda. See, brine solution mean to say sodium chloride mixed in water, that means aqueous solution of sodium chloride is known as the brine solution. So that means we need NaCl plus water, it is the brine solution, plus when we pass carbon dioxide through it with saturated solution or with saturated ammonia, okay, NH3. What it will give the formation? See, sodium chloride mixed into water, that means it is a brine solution. When we pass carbon dioxide through it with the saturated ammonia, okay, it will give the formation of ammonium chloride NH4Cl and sodium bicarbonate NaHCO3. It is sodium bicarbonate. As I told you in the previous lecture also, sodium bicarbonate, moreover we can say baking soda, the common name is baking soda. See, after preparing the baking soda, what we need to do here?
First of all, we have to filter the solution of baking soda. After filtering, we have to dry it, and after dried, we need to ignite that. Ignited means to say we need to heat that. Okay. जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू फिल्टर द सॉल्यूशन. आफ्टर फिल्टरिंग जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे, उन प्रेसिपिटेट्स को हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्राई दोज प्रेसिपिटेट्स, एंड आफ्टर ड्राई करने के बाद हमें उनको क्या करना है, हीट करना है. ओके. एंड आफ्टर हीटिंग हमें क्या मिला था बेकिंग सोडा के प्रोसेस में भी मैंने आपको ये बताया था. आफ्टर हीटिंग वी गोट sodium carbonate, carbon dioxide gas released during the reaction, and plus water formation will be there. Okay. So let's write the reaction. See, as we will heat the sodium bicarbonate, after heating it will give the formation of sodium carbonate plus carbon dioxide will release and water formation will be there. And this unhydrated sodium carbonate is known as soda ash also. Soda ash. Unhydrated mean to say which is water free, जिसके अंदर water के molecules present नहीं है. It is in the unhydrated form. Okay. So now what we need to do? We need to recrystalline the solution or recrystalline the sodium carbonate. Okay. So our next reaction will be, that means in the preparation of washing soda we need to write all the steps which we used in preparation of baking soda. You already know that how to prepare the baking soda. Same reaction we used in case of baking soda. So what will be the third reaction? Now we got sodium carbonate Na2CO3. It is unhydrated sodium carbonate which is also known as soda ash, as I told you here. As we will recrystalline it with water, 10 molecule of water we will add, and it will give the formation of Na2CO3 into 10 molecule of water. Now it is the formula of washing soda. Common name is washing soda. If we talk about the chemical name will be sodium carbonate decahydrate. Sodium mean to say Na is the symbol for sodium, CO3 stands for carbonate, 10 stands for deca, water H2O stands for hydrate. That means the common name will be sodium carbonate decahydrate. Okay. And which process we use to prepare this? The name of process is Solvay process. Due to the use of ammonia, it is known as Solvay process also. And moreover, if we talk about the nature of washing soda like the baking soda, we know that the nature of baking soda is alkaline. That was basic in nature. Same thing here, washing soda is also alkaline in nature. Alkaline, you can say basic also. किसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, बेसिक नेचर. तो हेयर वी हैव डिस्कस 3 रिएक्शन हमें ज़रूरत है. व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, कि हमें क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी है विद सैचुरेटेड अमोनिया, मीन्स NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3. वहाँ से हमें क्या मिला, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हुई. जब बेकिंग सोडा को सेकंड रिएक्शन में हमने क्या करना है, बेकिंग सोडा को सिंपली हमें हीट करना है. इट विल बी द सेकंड स्टेप. इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड इट इज़ थर्ड स्टेप. ओके. फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है बेकिंग सोडा वाला. सेकंड इज ऑल्सो सेम, वी हैव डन दिस ऑलरेडी in baking soda also. And what is the last step, third step, just to add 10 molecule of water into the unhydrated form of sodium carbonate. Okay. So now we will discuss about the uses of washing soda. One use is very common, you all are aware about that use, that what is the main use of washing soda.
because washing soda is mainly used for the cleaning purpose at domestic purpose, we can say. So if we talk about the uses where we have to use the washing soda, the very common use is that it is used to softening the hard water, कि जो hard water है उसको soft करने में use होता है. Moreover we can say that it is used to remove the permanent hardness of water. That means we can write it is used to remove permanent hardness of water, or you can write that it is used to softening the hard water. Okay. Secondly, it is used in laundry for washing and for cleaning also in homes, or we can say that it is used for domestic purpose also. Next is that it is used for manufacture of soap, paper, glass and caustic soda. Next, it is also used in laboratory as a reagent की फॉर्म में भी हम इसको लैब के अंदर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर sodium compound like borax. So here we have written 5 uses. First use is very common, that it is used for to remove the permanent hardness of water. Second is it is used in laundry to wash the clothes, and moreover it is also used for the cleaning purpose at homes, we can say, means in domestic purpose we have to use this. Next is it is also used in manufacture of soap, paper, glass and caustic soda. In lab also we need to use this, for which purpose we have to use it as a reagent. Okay. Next is it is also used in the laboratory to manufacture the sodium compounds, like we can say about the borax, it is the sodium compound. Okay, so it is all about the washing soda. So now we will discuss about the water of crystallization. Water of crystallization, very important topic it is. Water of crystallization. See, many times what happened, you might have seen in your lab that some chemical compound, like if we talk about copper sulfate,
Okay, it is the very common salt CuSO4 into 5H2O. You might all have seen this chemical compound, and the color of this copper sulfate is blue in color. Okay, it is blue in color and it is in the powdered form. Okay, जब हम इसको देखते हैं in the powdered form, देखने में हमें क्या लगता है, that the compound which we have in the powdered form, that is unhydrated. Unhydrated mean to say that water is not present in that chemical compound, but in real sense water is present in that in the form of moisture. These 5 molecule of water, that means it is the fixed number of water molecules are present in the copper sulfate. How we can prove it? आपको सिंपली हमें क्या करना है, we have to take some amount of copper sulfate or 5 molecule of water, this copper sulfate, in a test tube, and simply we need to heat the powder, the test tube. Okay, as we will give the heat to the test tube, what will happen, some water droplet you might have seen on the upper surface of the test tube, कि हमारे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका जो ब्लूइश कलर है हीट देने के बाद दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वाइट कलर, और टेस्ट ट्यूब की जो हमारा ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, वाटर की सम ड्रॉपलेट. फ्रॉम वेयर दोज वाटर ड्रॉपलेट्स कम, दैट मीन्स जो हमारा कॉपर सल्फेट का हमने पाउडर फॉर्म में कंपाउंड को लिया था उसके अंदर क्या था, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे जो हीटिंग के बाद इवेपोरेट होकर कहाँ पर आ गए हैं, हमारी टेस्ट ट्यूब की सरफेस के ऊपर. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दैट मीन्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड और एनी सोल्ट वी कैन से. ओके, सो इट्स क्वाइट ईजियर वन. वाटर के जब तक इसके अंदर 5 मोलिक्यूल वाटर के हैं, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू. जैसे ही हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर हीट करते हैं वाटर इसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा कम्प्लीटली. वाटर इवेपोरेट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा रहेगा, वाइट कलर. ओके, तो अब जो वाइट कलर में हमें अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिला है, अगर हम उसके अंदर अगेन से वाटर ऐड कर देते हैं तो अगेन उसका जो कलर है क्या हो जाएगा, ब्लू. ओके, तो दैट मीन्स हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि कुछ केमिकल कंपाउंड जो देखने में लगता है कि दैट इज इन द अनहाइड्रेटेड फॉर्म, बट इन रियल सेंस सम फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द केमिकल कंपाउंड. ओके, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन. हाउ विल यू राइट, फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल present in the one formula unit of a salt, you can write chemical compound also. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक CuSO4 इंटू 5H2O. जहाँ पर भी आपको फॉर्मूले के अंदर वाटर के साथ कोई भी फिक्स्ड नंबर लिखा हुआ मिले, दैट मीन्स दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लेट मी राइट सम एग्जाम्पल्स. सपोज 1 it is only, if we talk about CuSO4 into 5H2O, like earlier we have discussed about the washing soda. In washing soda also 10 water molecules are in fixed amount, and Na2CO3 into 10H2O. If we talk about plaster of Paris, we will study that topic after this water crystallization. It is our next topic. CaSO4 into half molecule of water. If we talk about iron sulfate, FeSO4 into 7H2O, you might have studied about this formula in chapter 1st in chemical reactions and equations. Okay, so see here, in all these chemical compounds what is the common thing, that water molecules are present in fixed amount. एक फिक्स नंबर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. फर्स्ट में क्या है, दैट मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इन सेकंड फॉर्मूला 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट इज हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, एंड इन आयरन सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट. सो ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई. Suppose in exam you have seen some examples
and any one example you might have given in which fixed water molecule are not present. Okay, so you have to find that which chemical compound is not considering the for डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो आपको इजीली पता चल जाएगा जिसके अंदर भी फिक्स वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखे होंगे दैट मीन्स वो क्या है, हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का केमिकल कंपाउंड नहीं है. ओके, सो इट्स क्वाइट ईजियर वन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Our next topic is plaster of Paris. In simple form we can say POP, and everybody knows about this word. Okay, and might you all have heard about the word POP, plaster of Paris. At our home also mostly we use this word. See, what is the color of plaster of Paris? Color is white. It is white in color. Okay, and it is in powdered form. If we talk about the color, it is white in color in powdered form. Second, its chemical name, chemical formula firstly we will write. Calcium sulfate hemihydrate, half molecule water. What will be the chemical name? Ca stands for calcium, SO4 stands for sulfate, half hemi, H2O, that means hydrate. Okay, so what will be the chemical name? Calcium sulfate hemihydrate. Okay, if we talk about the plaster of Paris, that means the common name is plaster of Paris. Okay, its color is white, chemical formula is CaSO4 into half H2O, chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Okay, so how it is prepared? See, it's not possible that we have to add half molecule of water in calcium sulfate directly. So to prepare the calcium sulfate and half molecule of water, if we simply we can say, if we want to prepare the plaster of Paris, what we need to do? Here we will take the gypsum. Okay, and in gypsum 2 molecule of water are present. Formula is remain same because calcium sulfate only 2 molecule, at the place of half water molecule we have to write 2 molecule of water are present in that gypsum को हमें लेना है. And what we have to do after taking the gypsum, we have to heat it 100 degrees Celsius in a kiln. Kiln mean to say in an enclosed vessel, भट्ठी जिसको हम बोलते हैं. Okay, in that we have to heat it, and during heating, okay, you have to keep it in mind that the temperature should not be raised above 100 degrees Celsius or above 373 Kelvin. Okay, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर शुड बी अप्रोप्रिएट. अगर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है तो जो वो हाफ मोलिक्यूल वाटर का बचता है जो हमें रखना है फॉर्मूले में, इट विल ऑल्सो इवेपोरेट. तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा? ओनली कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बचेगा, एंड दैट डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस. ब्रंट कैल्शियम सल्फेट, वो एक जला हुआ कैल्शियम सल्फेट का सब्सटेंस हमें मिलेगा विच डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि क्या चीज़ आपको करनी है. सी वी विल टेक जिप्सम. फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 इंटू 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर. हमारे पास क्या है? जिप्सम के अंदर 2 मोलिक्यूल वाटर के हैं. इट इज़ जिप्सम. ओके, हमें क्या चाहिए इसके अंदर? वाटर का हाफ मोलिक्यूल ही हमें इसके अंदर चाहिए.
have to notice this thing that only half molecule of water should be attached with the calcium sulfate as the water of crystallization। किस कैल्शियम सल्फेट के साथ केवल वाटर का हाफ मोलिक्यूल ही आपको अटैच करना है। ओके, जितना कैल्शियम सल्फेट होगा उसका हाफ वाटर। इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 इफ इट इज़ डबल दैट मीन्स वाटर मोलिक्यूल कितना होगा 1, ये डबल है तो ये हाफ होना चाहिए, मीन्स वाटर की जो क्वांटिटी है दैट शुड बी हाफ देन द कैल्शियम सल्फेट। ओके, सी नाउ व्हाट वी नीड टू डू है, वी हैव टू हीट इट एट 373 केल्विन इन अ किल्न। किल्न क्या है कि इनक्लोज्ड वेसल को हम बोलते हैं। हमें क्यों 373 ही लेना है, अगर ज़्यादा हो गया तो जो हाफ मोलिक्यूल हमें वाटर का चाहिए ये भी इवेपोरेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, केवल ब्रंट कैल्शियम सल्फेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। ओके, अगर हम इससे कम टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं तो हमारे पास जो वाटर मोलिक्यूल है तब भी वो हाफ नहीं रहेगा, वो माइट बी दैट इज़ 1H2O एंड दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो उसके अंदर भी हमारे पीओपी की जो प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करेगा। तो आपको माइंड में रखना है कि टेम्परेचर ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए। ओके, सो इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 इंटू हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 जो मोलिक्यूल हैं वाटर के, ये क्या हो जाएंगे, इट विल बी इवेपोरेटेड। नाउ इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द common name. If we talk about the chemical name, what will be the chemical name, calcium sulfate hemihydrate. Okay, it will be the chemical name. So it is the preparation of plaster of Paris. If we talk about the uses of plaster of Paris, okay, mainly it is used as the decorative purpose also. Okay, it is used as the decorative purpose. Secondly, it is used to make some pottery, toys, models, statues. In that case also we have to use the plaster of Paris. And the very common use of plaster of Paris, you might have heard and seen this. It is used for the setting of broken and fractured bone. As medical purpose also we can use this. And if we talk about the lab, in lab also we have to use it to sealing the apparatus, means to fill the gap in the and to make the apparatus airtight. Okay, so these are some uses of plaster of Paris. So dear students, it is the end of our the chapter acid, bases and salts. So soon we have to start the next chapter. Till then, thank you and goodbye, and you might have revised your day chapter. Okay, goodbye.